Domain bacteria in the five kingdoms system. This domains was included in kingdom Monera. ये domain जो है मुश्तमिल है kingdom Monera के साथ. They are the true bacteria. ये true bacteria हैं. They possess several distinct characteristics. ये जो है possess करते हैं कई distinct characteristics खसूसियात that differentiate them from other domains. ये जो differentiate करता है इनको दूसरे domains से. आर्चिया एंड यूक्रिया. आर्चिया और यूक्रिया जो है हियर आर द जनरल करेक्टरिस्टिक्स. यहाँ जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स या खसूसियत हैं ऑफ द डोमेन बैक्टीरिया. डोमेन बैक्टीरिया के लिए सेल स्ट्रक्चर जो है लाइक आर्चिया बैक्टीरियल्स पोजेस करते हैं प्रोक्रियाटिक सेल्स लेक ए ट्रू न्यूक्लियस. इनमें जो है लेक होते हैं ट्रू न्यूक्लियस एंड membrane bond organelles. Cell wall composition. Bacteria have a cell wall composed of peptidoglycan. ये composed है peptidoglycan के साथ unique polymers that provides structure, support and shape. Genetics materials like archaea bacteria possess a single circular chromosome. इनमें जो है single और circular chromosome होता है. Composed of DNA जो composed है DNA के साथ located in the nucleoid region. ये located है nucleoid region के साथ. Plasmid. Most bacteria have small circular DNA molecule that can be transferred between bacteria. Adding in genetic diversity ने add किया जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी में और अडॉप्टेशंस में. रिप्रोडक्शंस. बैक्टीरिया प्राइमरली रिप्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिशंस. ए प्रोसेस वेयर ए सिंगल सेल डिवाइड. एक प्रोसेस जिसमें जो सिंगल सेल तकसीम होते हैं इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में. न्यूट्रिशनल मोड इंक्लूड ऑटोट्रॉफ्स cell feedings, for example photosynthetic bacteria, and heterotrophic feedings on organic matter, for example decomposer. Morphology जो है bacteria accept a variety of shapes such as cocci, spherical, bacilli, rod shaped and spiral shaped and vibro comma shaped. Arrangement जो है cell में be found singly, in pair, Diplococcus chains and Streptococci clusters. Streptococci or other arrangement based on species-specific characteristics. Flagellum. Many bacteria have one or more flagella, whip-like structures that enables movement. Pili and Fimbria. These are hair-like structures in some bacteria. This cell in attachment to surface and in exchange of genetic materials with other bacteria. Respirations. Bacteria can be obligate aerobes, obligate anaerobes, facultative and aerobes, macro aerophils or aerotolerant anaerobes. Some bacteria performs fermentations to produce energy in the absence of oxygen. Extremophiles. Some bacteria thrives in extreme conditions such as high temperatures. Thermophiles, high salinity, halophiles and low pH. Acidophiles. Pathogenicity. Some bacteria cause disease in human, animals and plant, producing toxins or other virulence factors. Symbiosis. Many bacteria live in symbiotic relationship with other organisms, including mutualisms, both benefits and commensalisms. One benefit, the other is not harmed. Cocci, spherical, bacilli, rod-shaped and vibro is comma-shaped. Spirals, spiral-shaped. Different form हैं बैक्टीरिया की. Major groups of bacteria
The domain bacteria is divided into numerous groups. For examples, Proteobacteria, for example, Escherichia coli, Rhizobium, Helicobacter pylori, Firmicutes, Bacillus subtilis, Lactobacillus, Clostridium botulinum, Actinobacteria, Streptomyces, Mycobacterium, tuberculosis, Cyanobacteria, Anabaena, Spirulina, Spirochetia, Triponema, Palladium, एसिडोबैक्टीरिया जो है एसिडोबैक्टीरियम्स एंड इक्विफेसी इक्विफिक्स पैरोफिलिक्स। आगे जो है जो टॉपिक है वो कौन सा स्टार्ट हो रहा है जो मैं जो